Hello, everyone. Good evening. A very warm welcome to Diabetes Bytes. And today we are having a very special episode. And we have Dr. B.M. Makkar. Dr. Brij Makkar is currently the president of RSSDI. And today we are going to talk about on a very interesting and special topic. We know diabetes is a chronic condition and it requires careful management and lifestyle considerations. And alcohol consumption can have both long term as well as the short term implications on control of diabetes as well as other consequences can also happen. So as a RSSDI, we thought that it is good to have some kind of discussion so that we can provide evidence-based insights and practical tips to navigate this complex interrelationship between the diabetes and alcohol. So Dr. Brij Makkar sir, a very warm welcome to you on this special episode of Diabetes Thank you, Bites. Amit, and good evening, everyone. Welcome to this show. Hope you will get some, important tips about the day-to-day, lifestyle changes that are required to live with diabetes happily and healthy. So, sir, I thought that let us introduce the topic by asking one of the very common question that comes to the mind of the people: that what are the potential risks and considerations which are associated with alcohol intake for individuals with diabetes? So, Amit, this is, it is not just for people with diabetes. It is for everyone that there are some inherent risks associated with alcohol. And the first and foremost is the addiction potential. Whenever somebody is taking alcohol, we all know it has its own, addiction potential. And addiction is not a good thing to happen. So it is very important to keep in mind that first thing is that it can lead to alcohol addiction. Now, second important thing is that alcohol per se also acts as a neurotoxin or toxic. It has toxic, effects in liver also. So, alcohol can worsen neuropathy, or alcohol also happens to be, chronic alcohol intake is also one of the causes of toxic neuropathies. Then, alcoholic liver disease we are all aware of. So alcohol is one of the important causes of liver damage. And alcoholic liver disease can be, in various ranges. We see people who are having chronic alcohol intake or addiction are likely to get, alcoholic liver disease, the severe forms of alcoholic liver disease like cirrhosis and so on. But these things are associated with chronic excessive alcohol intake. That is also to be kept in mind. So alcohol per se, if somebody is not taking alcohol, should not take alcohol. That is important because one, you never know you can get addicted to it. Second, if you have diabetes, you are more prone to get, more severe complications in terms of getting neuropathy and at least liver damage. Then alcohol is also cause of damage to heart. Alcohol can lead to toxic cardiomyopathy also. Some of these situations. So there are multiple things that alcohol can cause. But largely, all these things happen in people who are having a chronic excessive alcohol intake or who indulge into, binges of drinking, not with the social kind of drinking or only with the moderate alcohol intake that is, kind of okay or acceptable in people with diabetes or even in normal life. Thank you, sir. You have very well highlighted that what can be the impact of alcohol, and the message is very clear that alcohol can be has addictive potential. It can lead to complications at various organ system level. So one common question which comes to the mind of everybody who is living with diabetes and is having an inclination to take alcohol. So how does alcohol affect the glucose levels and what is the impact of the alcohol on the glycemia? तो सर थोड़ा सा हिंदी में भी बात करते हुए सर कि डायबिटीज जो है वो अल्कोहल जो है वो डायबिटीज को कैसे अफेक्ट करता है या ग्लूकोज लेवल को कैसे अफेक्ट करता है? तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर कोई एक्सेस अल्कोहल ज़्यादा अल्कोहल लेता है और रेगुलर लेता है तो उसके अपने डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म में। उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, न्यूरोपैथी बढ़ जाती है, हार्ट डैमेज हो सकता है, लिवर डैमेज होता है, सो ऑन। दूसरा ये है कि जो डे टू डे बेसिस पे अल्कोहल जो है बेसिकली एक लिवर सप्रेसेंट है।
इट सप्रेसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लिवर, ग्लूकोज प्रोडक्शन जो होती है लिवर में उसको कम करती है अल्कोहल। अब हम जब दवाइयां यूज कर रहे होते हैं तो दवाइयों से भी हम ग्लूकोज प्रोडक्शन कम कर रहे होते हैं लिवर के अंदर। तो अगर कोई दवाइयों के साथ है, शुगर कम करने की दवाइयां चल रही हैं और अल्कोहल ले रहा है, तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया या बहुत ज्यादा लो शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन भी बन सकती है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है आपको पता होना कि आप क्या दवाइयां ले रहे हैं, और आप अल्कोहल आपको उन दवाइयों के साथ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और ले रहे हैं तो आपको कितनी आपकी लिमिटेशन है उसके साथ, और आपको उसके साथ क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग जिस दिन अल्कोहल ले रहे होते हैं, कई बारी अल्कोहल ज्यादा लेते हैं तो खाना नहीं खाते। उसमें आपकी एक तो आपकी फूड इनटेक नहीं है, तो ग्लूकोज बढ़ाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, उल्टा ग्लूकोज सप्रेस करने की आपकी पोटेंसी बढ़ गई, तो उसमें सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया प्रेसिपिटेट होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए अल्कोहल और डायबिटीज में जब भी आप इस सिचुएशन में है, तो आपको डिटेल में समझ होनी चाहिए कि आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं। और अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आपको दवाई उसके साथ को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर दवाई ले रहे हैं तो आपको खाने के बारे में पता होना चाहिए कि खाना उस दिन स्किप नहीं करना है। मे बी अगर आपको डाउट है कि आपकी शुगर लो हो सकती है, तो एक ग्लास, छोटा ग्लास जूस का आपको साथ में ले लेना चाहिए। सो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान रखने होते हैं, अदरवाइज अल्कोहल से सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। दूसरी चीज होती है, अल्कोहल एंजाइम इंड्यूसर भी होता है। कुछ लोगों में जो ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, कुछ दवाइयों का असर कम या चेंज हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली काफी सारी दवाइयां लिवर में मेटाबोलाइज होती है। अल्कोहल भी लिवर में मेटाबोलाइज होती है और लिवर के एंजाइम्स को भी इंड्यूस करती है, जो बाकी दवाइयों के मेटाबॉलिज्म को चेंज कर सकती है। सो इसलिए अल्कोहल और ड्रग इंटरेक्शन हमेशा हमें दिमाग में रखना चाहिए जब हम डायबिटीज पेशेंट्स के बारे में अल्कोहल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। Sir, at this point of time, I would like to make it clear to our audience that RSSDI does not recommend the intake of alcohol. We are not. This show is not about recommending alcohol. It is a person is in person has full liberty to make their own informed choices. We are here only to guide them. If they have it, they have decided that they are taking alcohol, then what can be the harmful effect, how it can affect their glucose levels, and what can be done to minimize that. So this is the sole crux of this episode. So it should not, the message should not go that we are talking about alcohol and how alcohol can be taken in people with diabetes. So this thing नहीं, should be ये clear. बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि अल्कोहल कभी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं है। Yes. ये कभी भी रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसका बहुत सारे पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एडिक्शन, इन टर्म्स ऑफ ड्रग साइड इफेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिव इनटेक लीडिंग टू डैमेज टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सो ऑन। बट हमें एक चीज ये दिमाग में रखनी होती है कि बहुत सारे आज की डेट में जो कल्चर है, उसमें सोशल ड्रिंकिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन। एंड बहुत सारे लोग ये सवाल आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं इतना ड्रिंक करता हूँ तो मुझे कितना करना चाहिए, या मेरे को क्या करना चाहिए। सो बेस्ट ऑप्शन इज, अगर आप क्विट करना चाहते हैं क्विट कर। बट अगर आप लेना चाहते हैं अल्कोहल और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको सेफ सेफ अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, which which should not affect your disease progression or increase the risk of complications, and at the same time you can enjoy your social life. That is important, because we also need to focus on quality of life. That is why we are discussing all these things. आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में सोशलाइजेशन में अल्कोहल कंजम्पशन कॉमन होता जा रहा है, तो एक टॉपिक ये इम्पोर्टेंस और रेलेवेंट भी हो जाता है। बट certainly in no way we are recommending कि डायबिटिक पेशेंट with diabetes or people who are living with diabetes should consume alcohol. It is never recommended. सर बहुत 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 शुक्रिया, आपने ये बताया कि किस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक है अलाउंस और एक है कि आपको ये समझना है कि डायबिटीज के साथ अल्कोहल नहीं लेना है, बट अगर आप डिसाइड करते हैं लेना है तो आपको उसके रिस्क भी समझने हैं, और हम जो हमारा ये प्रयास है कि कैसे उसको कम से कम किया जा सकता है। तो सर, देयर आर वेरियस सोसाइटीज व्हिच हैव गाइडलाइंस रिगार्डिंग द
permissible intake of alcohol. So, what is your take on that? What are the guidelines which one should look for, and So what is the safe and एक्चुअली कोई भी सोसाइटी की आई डोंट थिंक किसी की भी स्पेसिफिक गाइडलाइन है ऑन अल्कोहल कंजम्पशन. बट whenever we talk of lifestyle interventions, so alcohol consumption उसमें definitely figure in करता है. Because if whenever you are talking of lifestyle, it comes to your physical activity, it comes to your social life, which includes your food and your drinking habits or your smoking and other things. So if you talk about smoking, now smoking is also another factor which needs a discussion at so many times. So in smoking, there is no discussion; it has to be stopped. There is no discussion that smoking can be allowed in a moderate limit or small amount of smoking consumption can be permissible. But with alcohol, there are number of studies which have shown in past. But there are again, I'm telling you, यहाँ ना contradicting results हैं. रोज कुछ स्टडी आती हैं जो शो करती हैं कि अल्कोहल से डैमेज होता ही है, और कुछ स्टडीज ने बड़ा कन्विंसिंगली ये भी शो किया है कि अल्कोहल से हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं. बट जो ये जो आपकी स्टडीज हैं, ये बड़ी जनरल पॉपुलेशन के अंदर, स्पेसिफिकली डायबिटीज पॉपुलेशन को एड्रेस नहीं करती है. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई थी, इंटर हार्ट स्टडी, जिसमें ये दिखाया गया था कि अगर आपकी अल्कोहल कंजम्पशन विद इन 60 ml पर डे है, देन इट मे बी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ. बट बाद में काफी स्टडीज ने शो किया कि ऐसा कुछ नहीं है. तो ये चीजें डाउटफुल है. बट सर्टेनली अगर एक लाइन डिफाइन की जा चुकी है जिसको हम मॉडरेट अल्कोहल इंटेक या सोशल ड्रिंकिंग की डिफाइन करते हैं, कि अगर आपकी डेली कंजम्पशन जो है फॉर मेन इट इज नॉट मोर देन 60 ml, और फॉर वुमेन इट इज नॉट मोर देन 45 ml पर डे, then it is a acceptable social drinking limit, or it is considered mild to moderate alcohol intake, moderate alcohol intake. Anything above this is not acceptable. It should not be practiced. So बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका, आपको एक पेशेंट मिलता है जो 70 ईयर्स पे डायबिटीज लेके आता है, और वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो 40 साल से मैं तो रोज शाम को एक ड्रिंक पीता हूँ, और वो मैं छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं अब रिटायर्ड हूँ, मेरा लाइफस्टाइल यही है, मेरा बाकी मैं फिजिकली भी एक्टिव हूँ, मैं डाइट भी मेरी ठीक है, शुगर कंट्रोल भी मेरा ठीक चल रहा है. तो उसमें आपको उसको अलाउ करने में कोई हार्म नहीं है, बिकॉज उसका सी अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट जस्ट इंक्रीजिंग longevity, it is also to improve quality of life. A person who is getting diabetes at the age of 70 years and is going to control it well and living nicely, the chances of getting complications over the next 15, 20, 25 years are very low. But to compromise the quality of life at that point of time is not a very good idea. And his social behavior has been very consistent. If 40 years he has not become an addict, then he is unlikely to become an addict. So ऐसे केस में आप उसको काउंसिल कर सकते हैं और अलाउ कर सकते हैं कि इसके ऊपर आपको नहीं जाना है कभी भी, और ये ध्यान रखना है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क रहता है, तो आपको वो सारा वॉचफुल रहना है. यू शुड नो हाउ टू मैनेज योरसेल्फ. बट इफ समबडी कम्स टू यू एंड सेज बॉस मैं हफ्ते में 2 ही दिन पीता हूँ, पर मैं 2 दिन 4 4 ड्रिंक पीता हूँ, सो इट इज नॉट 7 ड्रिंक्स इन अ वीक, it is 7 drinks over 2 occasions in a week. That is not permissible, because that will lead to severe, risk of hypoglycemia. Plus, binge drinking is always bad for, system and liver. So it is not a good drinking behavior. It is binge drinking. So binge drinking is not a good idea. While social drinking can be maybe permissible for people in select cases where you think that it is unlikely to be harmful for this person. सो दो चीजों को हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, और हमें ये पता होना, और जो जो लोग हमारे पास आके सवाल पूछ रहे हैं या इसको डिस्कस कर रहे हैं, उनको ये समझ आना चाहिए कि एक ड्रिंक की डेफिनेशन क्या है.
सो कॉमनली पेशेंट विल टेल यू डॉक्टर साहब मैं तो एक ही ड्रिंक लेता हूँ. अब वो एक ड्रिंक उसकी 180 ml भी हो सकती है और उसकी 30 ml भी हो सकती है. सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन आस्किंग कि क्या लेते हो आप. हार्ड ड्रिंक लेते हो तो कौन सी लेते हो. आपको परसेंटेज अल्कोहल पता होनी चाहिए, आपको उसका मेजर साइज पता होना चाहिए, आपको उसका कन्वर्जन पता होना चाहिए कि अगर वो वाइन लेता है तो कितनी लेता है. If 60 ml of hard drink is permissible, then how much of wine is permissible equivalent to that, or how much of beer person can take? And if person is taking beer, उसमें कितना sugar, composition आएगा. तो ये सारी चीजें आपको पता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैनेज नहीं किया जा सकता. But yes, alcohol is not recommended to be taken by people living with diabetes. However, if they want to continue with social drinking in a very, very disciplined manner, it may be allowed. Sir, so let us shift our focus to those people who take it occasionally on a or as a part of their social gathering and all. So, how should they plan? How should they monitor their blood sugar level? What precaution they should take? How should they take their medication? So, what is your advice for these people? So first thing is पहली चीज तो उनको सोशल ड्रिंकिंग की अपनी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. सोशल ड्रिंकिंग डजंट मीन नॉट. वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिस दिन रूटीन में भी वो सोशल ड्रिंकिंग मतलब घर पे भी डेली एक ड्रिंक लेते हैं और जिस दिन पार्टी में होते हैं उस दिन 4 ड्रिंक लेते हैं. तो वो सोशल ड्रिंकिंग नहीं है, वो बिंज ड्रिंकिंग है. बट आप वही एक ड्रिंक लेते हैं, आप सोशल सर्कल में है, पार्टी में, यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ टू दैट वन ड्रिंक, इट इज ओके. Now, with that one drink, you have to be particular to watch for low sugar levels. So you should always be careful when you are going for the party. You know what is your sugar level before the party. You should know what kind of food you are going to consume. आपको दवाई खानी है उसके क्या इफेक्ट आ सकता है. और आपको बेड टाइम एक बार शुगर अपना जरूर चेक करना चाहिए सोने से पहले. और मे बी इफ यू फील स्लाइटेस्ट डाउट कि शुगर लो हो सकती है या जो भी आपके डॉक्टर ने आपको बताया हुआ है, तो आपको मतलब स्मॉल ग्लास ऑफ जूस और सम शुगर ड्रिंक यू शुड take at bedtime, or maybe cup of milk you should take at bedtime to safeguard for the risk of hypoglycemia. बट अगर आप सोशल की आप सोशल ड्रिंकिंग की आपकी डेफिनेशन जो है वही अगर आपकी फ्लॉड है, तो आई थिंक यू आर एट वेरी हाई रिस्क. सर, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त लाइव वॉच कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसको बाद में भी देखेंगे. टू नेम ए फ्यू, डॉक्टर नीरज वोरा, डॉक्टर नरेश खन्ना, डॉक्टर प्रॉमिस जैन, डॉक्टर राकेश दीवान, मिस्टर अमृतपाल सिंह बेदी, डॉक्टर जया कृष्ण. They are all appreciating this discussion and they've given their inputs in the comment box also. So, sir, I would like to ask you that now we have discussed about the drinking types of drinking. So, is there any difference if somebody chooses a different type of drink? So, if somebody is having diabetes, decides to take alcohol, so what type of choices they should make while choosing the alcohol? See, it doesn't matter. It doesn't matter. What matters is the total amount of alcohol taken. Right. So if they are taking 60 ml of, hard drink like whiskey or vodka or gin, it is equivalent. It does not matter. Now, same amount of drink, if you convert it to beer, it will be 1 pint of beer. If you convert it into wine, it will be 1 glass of wine. So you should know what you are taking and how much is the permissible. So if you are doing that, wine में थोड़ा sweet wine होती है, grape juice से बनती है, sugar level थोड़ा ज़्यादा होता है, but it is not going to kill the sugars. Same as with beer, it doesn't matter if you are taking 1 pint of beer, it is not going to change your sugar levels much. Those things are immaterial if you are, doing a judicious plan and following a, disciplined social drinking. But if you are going haywire, then you never know whether you'll get with high sugar or low sugar. Because if you are not on a disciplined alcohol intake, I'm sure that you will not be on a disciplined food intake also during that time. So both the things are going to go haywire. सर, अक्सर एक ना बड़ा कॉमन सा क्लिनिकल सिनेरियो होता है एंड many of the times when the patient they come to us, they don't openly discuss about this problem, but we find that if somebody is taking alcohol regularly, they will miss the medications. They will not take their medications at all.
So is this kind of behavior advisable? सो अगर सी अगर किसी कोई पेशेंट है जिसकी डायबिटीज वेल कंट्रोल्ड है और रेगुलर मेडिकेशन चल रही है और जैसे घर पे भी वो अल्कोहल लेते हैं, ओनली थिंग इज दे हैव टू कीप मेजरिंग केयरफुली। और अगर उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, आई डोंट थिंक मेडिकेशन स्किप करने की जरूरत है, अनलेस दे आर ऑन मेडिकेशन विच कैन पुश शुगर्स वेरी लो। But yes, even metformin can, suppress hepatic glucose production. Even DPP4 inhibitors can suppress glucose production from liver. But usually इनका suppression इतना ज़्यादा नहीं होता है। और for, what do we say is moderate alcohol intake, usually it does not make difference unless the patient is skipping meal. Just taking alcohol and skipping meal, that can precipitate hypoglycemia. But patient has taken full meal and checking sugar, chances are very, very low. But yes, if you feel there is slightest doubt that patient may get into hypoglycemia, patient can skip the night dose of metformin or whatever medication is taking, just to keep the sugar level slightly on the higher side. But this I don't think is a good practice personally, because what happens is somebody is taking this every evening or alternate evening, then the sugar level will keep fluctuating, which is not a good idea. So one should have a consistent pattern of whatever is being done. सर But अक्सर yes, if एक somebody is taking only one drink once a week and 6 days he is doing, everything is going fine, then one can skip, dose, bedtime dose on one particular day is not going to do much. and sir, what should be done for the insulin? Somebody should check their sugar level before taking insulin. सो Somebody is on insulin. इंसुलिन, व्हेन वंस मैंने कहा ना, कुछ दवाइयां जो शुगर लेवल्स को काफी लो पुश कर सकती हैं, तो उसमें इंसुलिन हैं, सल्फोनाइल यूरियाज हैं, तो उससे शुगर लेवल्स लो जाने के चांसेस बढ़ेंगे। तो उसमें आपको मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग चाहिए, आपको प्रॉपर खाना चाहिए, और आपको एक एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत है कि आप प्री मील भी शुगर चेक करेंगे, पोस्ट मील भी चेक करेंगे बेड टाइम पे, और एंड यू विल मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग सम शुगर ड्रिंक और समथिंग लाइक अ कप ऑफ मिल्क एट बेड टाइम, क्योंकि once you have taken alcohol it can also delay gastric emptying, so your peak of glucose may happen later, you know सो यू डोंट नो बाद में क्या होना, बाद में कितनी पीक आएगी। हो सकता है अभी आपकी शुगर ठीक लग रही है, जब तक पीक पहुंचेगा तब पीक होने के बाद वो डिले होके कितना जाएगा कुछ नहीं पता है हमें। सो इट इज बेटर कि आप फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करें और सेफ प्ले करें उसमें। खाना पूरा खाएं, शुगर फ्रीक्वेंटली चेक करें, slightest symptom of hypoglycemia you should measure sugar repeatedly, make sure that you are taking enough food, don't cut down your food intake, take a cup of milk or juice before you go to bed, or fruit, so that you can avoid hypoglycemia. सर मुझे लगता है ये और जानकारी हमारे जहाँ पे भी आपको डाउट है कि अल्कोहल इंटेक से आपकी डायबिटीज मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, इट इज टू बी बेस्ट अवॉइड, यस सर। इट इज सर बेस्ट अवॉइड। मुझे सर आपके द्वारा दी गई जानकारी मुझे लगता है हमारे यूजर्स के लिए बड़ी बड़ी यूजफुल होगी और उनको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। कुछ क्वेश्चंस भी हैं सर चैट बॉक्स में, और एक डॉक्टर किरीट कुबावत है अहमदाबाद से, ही इज आस्किंग कि इज रेड वाइन यूजफुल? तो So there is no data to say that this is useful for management of diabetes or in people with diabetes. Yes, रेड वाइन में बहुत पहले स्टडीज हुई हैं जिसमें इसका हार्ट के बेनिफिट शो किए गए हैं, बिकॉज ऑफ दी क्या कहना चाहिए इनमें, आइसोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं या कुछ कंपोनेंट्स होते हैं रेड वाइन में, एंड दिस इज व्हाट वाज labeled as French paradox. To begin with, when we started understanding that French people had lesser incidence of heart disease than as compared to other people, and red wine was maybe one of the reasons, or there are some countries जहाँ fish consumption का reason था, but red wine per se, give if it is being taken by people with diabetes, the amount you are taking is only one glass. It is not going to be. We don't have any data to show that this is beneficial for people living with diabetes.
I think the message is very clear. Dr. Makkar has already pointed out that it is a quantity which is very, very important. So most of the time it doesn't make a difference. And people with diabetes, because we know that most of the patients they have that the data shows that a large number of population doesn't have good or optimal control of glucose, so they are likely to have some kind of or the other complication. So it is better to avoid alcohol. But if you at all decide to take alcohol, then it is wise to follow certain practical tips which has been shared by Dr. Makkar today on this platform. Sir, there is one very common question in the mind of the people. Does the type of diabetes makes any difference to the alcohol consumption? Yes, I think type 1 people, the glucose fluctuations are very high usually, unless they are on pump. And there, I think taking alcohol can be more of a problem, unless they are again very well controlled, very well monitored, and they are using something like a closed loop pump, जहाँ पे आपको monitor करना आसान है, जहाँ fluctuation easily आप pick up कर सकते हो. अदरवाइज उनमें आई थिंक मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होगा और उनमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क वैसे भी पीपल ऑन इंसुलिन हैव द हाईएस्ट रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया. So I think it is best avoided. Second thing is type 1 diabetes usually starts early in the course of life. So you have to live a long duration of life with diabetes. The higher is the time of life spent with the increased glucose levels or diabetes, the higher is the risk of complications. Now, if you are taking alcohol and not, following it judiciously, you are likely to increase the risk of complication. तो मेरे ख्याल से वहाँ पे रिस्क और ज़्यादा है. टाइप 2 डायबिटीज़ में क्योंकि आपका ऑनसेट ही हम मान के चल रहे हैं, आजकल तो बच्चों में भी हम देख रहे हैं 25-30 साल की एज में टाइप 2 डायबिटीज़ होने शुरू हो जाती है. बट क्योंकि एक तो ऑनसेट लेट होता है, दूसरा आपकी इनिशियल फेज में इतना लो होने का रिस्क नहीं होता, आपको कम दवाइयाँ चाहिए होती हैं अगर टाइम से डिटेक्ट हो गया है, और आपको मैनेज करना इजी होता है, वहाँ मेरे ख्याल से रिस्क लो है. बट आई डोंट थिंक कोई कंपैरेटिव स्टडी है ऐसी जिसमें देखा गया हो कि टाइप 1 में रिस्क ज़्यादा है या टाइप 2 में कम है. बट दिस इज माय टेक ऑन यू नो Sir, this question, maybe we are reaching the last few minutes of our episode. So I would just like to ask a reverse question. There may be some patients who are having diabetes, who have been taking alcohol for a long time, but now they have understood that taking alcohol is no longer a good option for them because they are developing some kind of complications. And now they want to leave the alcohol. They want to quit the alcohol. So what should be the advice for them? How it should be taken? How they it should should be be done for advised to these quit. patients? There is no second thought. They can quit. They should quit. If they want to quit, they should quit. And what all the precautions these people should take whenever they decide to quit, sir? No, no precautions. Once they have quit alcohol, it is easier to manage their diet, lifestyle. Monitoring is less required, less because the hypoglycemia risk will be, which is all attributable to alcohol, is cut down. So there is no harm. Right, sir. So, sir, we are reaching our deadline of 30 minutes. So, I would again request you to sum up your message for the audience so that they have a very clear cut idea what we have discussed and take home message from your side, sir. So I think what I have tried to convey is very clear. कि पहली चीज in people with diabetes, alcohol consumption is not advised, not advisable. सेकेंड थिंग, अगर क्योंकि हमें ये भी देखना है कि जो भी हम ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ये जो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए साथ आपको पूरी लाइफ जीना है. तो अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है तो उस ट्रीटमेंट को हम उस फैक्टर को भी हमें इम्पोर्टेंस देना जरूरी होता है. और अगर आपके लाइफस्टाइल में सोशल ड्रिंकिंग इन्वॉल्व है, which confines to the defines of social drinking, जिसको हम डिफाइन करते हैं कि आप एक सिंगल ड्रिंक, the by measure, uh, if you want to say two drinks, well, but the volume or the measure I have mentioned already कि आप उस लिमिट के अंदर लेते हैं और उससे ज़्यादा आप नहीं लेते हैं. और अगर उसके साथ अपनी लाइफस्टाइल के साथ अपनी डाइट, मॉनिटरिंग, शुगर, फ्रीक्वेंट शुगर मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, then maybe you can continue with
that kind of alcohol consumption. But anything higher than that is going to be harmful. We don't have any data on safety of consumption of alcohol, whether in binge drinking or chronic alcoholism. Certainly, it has been shown to be harmful, and it can increase the risk of complications in diabetes, especially the acute hypoglycemia also. So it cannot be recommended for people with diabetes. Social alcohol consumption or moderate alcohol consumption is permissible, is acceptable, provided patient knows what it means by social or moderate alcohol consumption and how to handle diabetes management along with it without increasing the risk of complications. Then only one should continue. If there is slightest chance that it is going to increase the risk of your complications, I think it is best to avoid. Thank you, sir, for very nice information which you have shared with our audience. I am sure after this session, they will be able to make some informed choices in their life that how to manage their diabetes, how to take a decision regarding the alcohol consumption, what is good for them, what is bad for them, and this is episode is certainly going to help them. So I would like to thank you, and it was a pleasure to have the president of RSSDI, Dr. Makkar, with us. Thanks to Dr. Purvi So Chawla thank for you. setting this up, because she is a regular host of this Diabetes Bytes, and very soon Diabetes Bytes is going to enter its third year of inception. And again, we will be back with very interesting topic next week, which our viewers will find very very useful. Till then, a goodbye to everyone. Thank you, Makkar sir, again on behalf of the RSSDI in our viewership. Thank you very much, sir. Thank you, Amit, and thank you for this opportunity. I think this was an important topic which needs discussion in forums where people are interested in understanding the lifestyle with diabetes. I think that is important component. Thank you once again, and good night, everyone. Thank you, sir. Good night. Bye bye. Thank you.